Hey, welcome to all my dear friends and all my dear students again to my channel. Myself Krutibas Rai. Welcome to my channel. That is now we are discussing about basic concept of chemistry and the chapter is the part is molecular formula, empirical formula and mole concept. Introducing myself Krutibas Rai, lecturer in chemistry. Next, go through it. What are the chemical formula? Before discussing the molecular formula and the empirical formula, first we know what is a chemical formula. Chemical formula किसको कहा जाता है? The definition is a chemical formula is defined as a brief representation of molecule of an element or compound in terms of the symbol of various constituent elements present in it. How many number of molecules of an element or compound containing with the symbol of various constituent elements present in it is known as chemical formula. Chemical formula is generally consist of the elements and the compounds which contain some valencies, some formulas and some molecules. Next, come to the next point, that is the chemical formula of any substance is divided into two forms, into two parts, into two types. Those are empirical formula and molecular formula. The chemical formula is divided, दो पार्ट में डिवीजन हुआ है, एक है एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक है मॉलिकुलर फॉर्मूला. देन कम थ्रू व्हाट इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको कहा जाता है, ये इसका एग्जाम्पल क्या है ये डिस्कस करेंगे. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है ना, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिम्बॉल्स. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिम्बॉल. जितना भी एलिमेंट हम रहता है पीरियोडिक टेबल में, इस सबका एलिमेंट का सिंबल होता है. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिम्बॉल्स which represents the simplest whole number ratio of atoms present in one molecule of the compound. जो भी कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, जो टू फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, उसका जो होल नंबर रेशियो, जितना भी रेशियो टोटल रेशियो है, वो रेशियो ट्रू फॉर्मूला होता है. उसमें से अगर हम सिंपल रेशियो उसको बनाएंगे तो वो होगा क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला. इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द compound or one molecule. For example, if we take an example, empirical formula of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide means H2O2. The actual formula or the molecular formula is H2O2. So that the empirical formula of the compound is hydrogen peroxide. The compound of hydrogen peroxide, the compound that is hydrogen peroxide, the empirical formula is HO. Here we can see the molecular formula is H2O2, but the simple whole number ratio of H2O2 hydrogen peroxide is HO, means in the both hydrogen and oxygen atom, this contains two number of atoms. So if we convert into simplest form, then it is HO. Means if we common some things, like here we common 2. If we common 2, then here hydrogen is 2 and oxygen is 2. If we common 2 in both the sides, then this becomes HO. The empirical formula mass is calculated by adding of the atomic mass of the different elements present in the empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, बाय एडिंग डिफरेंट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला. जितना भी लाइक हियर HO, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 17.
Next, go through the molecular formula. What is molecular formula? Now, it is the true or actual representation of different atoms present in one molecule of the compound. जो भी एक कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला होता है उसको हम मोलिकुलर फार्मूला कह सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड का मोलिकुलर फार्मूला क्या है ना HCOOH. COH डेजिग्नेट फॉर एसिड. द सिंबल ऑफ acid is COH. The formic acid is HCOH. And that of the acetic acid, for acetic acid we can take the molecular formula CH3COH. And also in the previous example, in the empirical formula example, we had discussed H2O2. Here also the molecular formula of hydrogen peroxide is H2O2. Next, go through the relationship between the molecular formula and the empirical formula. What is the relationship between a molecular formula and an empirical formula? Mathematically, molecular formula and empirical formula, the relationship is molecular mass is equal to n number of n into empirical formula mass. If we calculate n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass. This is the formula for calculating a molecular mass or empirical formula mass, or a molecular formula and an empirical formula, where n is the number of n is the whole number. Determination of empirical formula. How to determine an empirical formula? What are the methods of determining an empirical formula? First is the relative number of each element is calculated by dividing percentage of each element by its atomic mass. And the second one is the result is obtained by dividing the lowest value among them. And the third one is the simplest ratio is converted to whole number by multiplying with a suitable integer and is written at the right hand lower corner of the respecting element. Go to the previous example. The first point is the relative number of each element. The relative number of each element is calculated by dividing the percentage of each element in its atomic mass. जो भी रिलेटिव नंबर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ना, जो भी एटॉमिक मास गिवन दिया हुआ है और जो एक्चुअल एटॉमिक मास है उसमें अगर अपन डिवाइडिंग कर देंगे तो हम पता चल जाएगा कि रिलेटिव नंबर्स ऑफ कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एटम में और वो एलिमेंट में. नेक्स्ट सेकेंड वन इज द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय द लोएस्ट वैल्यू अमंग देम. जो भी रिजल्ट आएगा रिलेटिव नंबर में, नेक्स्ट में क्या करेंगे ना, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम डिवाइड कर देंगे. जो भी रिलेटिव एटम्स आएगा, स्मॉल नंबर ऑफ रिलेटिव एटम आएगा, उसको हम सब में जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा उसमें सब में डिवाइड कर देंगे. वो वैल्यू हम सब में डिवाइडिंग कर देंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो हम पता चल जाएगा. एंड द नेक्स्ट वन इज द सिंपलेस्ट रेशियो इज कन्वर्टेड टू होल नंबर by multiplying with a suitable integer. If the simplest ratio is found to be in point or fractional, then the number is multiplied with a suitable integer. जो भी suitable integer होगा उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, क्या मिल जाएगा ना, होल नंबर रेशियो मिल जाएगा. For example, I am taking an example to explain you some examples for the determination of empirical formula and molecular formula. I am giving you one example. Actually, this example are written by me by taking my own notes. मैं खुद ये example अपने आप लिखा हूँ अपने notes को लेकर. So इस slide में ये जो 2-3 examples का slide है उस सब में मैंने क्या किया है ना, अपने नोट्स का जो फोटो है वो डाला है. देखो फॉर एग्जांपल 1 क्या है ना, गिव द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स
having atomic mass 10 and 50% of Y having atomic mass 20। यहाँ पे X का 50% एलिमेंट लिया गया है जो कि एटॉमिक मास 10 कंटेन करता है, Y का 50% लिया गया है जो कि एटॉमिक मास 20 कंटेन करता है। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज कैलकुलेटेड आज फॉलोज। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ये टेबल को याद रखना है। कैलकुलेट करने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ये टेबल को याद रखना है ना। फास्ट क्या है, जो एलिमेंट दिया गया है उसको लेंगे, एक कॉलम में एलिमेंट, दूसरा कॉलम में परसेंटेज वेट, कितना परसेंटेज गिवन दिया गया है वेट एटॉमिक मास का और जो एलिमेंट का। नेक्स्ट व्हाट इज एक्चुअली एटॉमिक मास, थर्ड कॉलम। फोर्थ कॉलम इज रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, कितना रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहता है वो एलिमेंट में। फिफ्थ कॉलम इज सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज लास्ट इज होल नंबर रेशियो। वी आर टेकिंग टू एलिमेंट्स as for the question x and y, and the percentage of weight is, percentage of x is 50 and percentage of y is also 50. The atomic mass given, that is for x 10 and for y 20. As for the rule, how can we calculate the relative number of moles? The relative number of moles is calculated by dividing its atomic mass with its weight, percentage of weight, or a percentage of weight divided by atomic mass. 50 by 10 is equal to 5, and second for y 50 by 20 it is 2.5. Here the relative number of atoms is 2.5 and 2.5 and 5. Then the small number ratio is 2.5. So we divide 2.5 in both of the columns, for x and for y, the relative number of moles. Then the simple ratio is 5 by 2.5, which is equal to 2, and for y is 2.5 divided by 2.5 is equal to 1. Then the whole number ratio, here there is no more integer or no more point, so the whole number ratio also 2 and 1. Therefore for x the whole number ratio is 2 and for y the whole number ratio is 1. So that hence the simplest formula of the compound is x to y. This is the empirical formula of the compound. X to y is known as the empirical formula of the compound. Next go to the another example. Example number 2. A substance on analysis gave the following composition. क्या क्या देता है ना, सोडियम Na इज इक्वल टू 43.4%, कार्बन इज इक्वल टू 11.3%, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 45.3%. देन कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है 23, कार्बन का क्या है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो नेक्स्ट गो टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द एम्पिरिकल फार्मूला इज कैलकुलेटेड आज फॉलोज। जैसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल में किए थे एक टेबल, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला के लिए टेबल वही टेबल हुआ, एक में एलिमेंट, एक में सिंबल, एक में परसेंटेज ऑफ वेट, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। टेक ऑल दोज एलिमेंट्स, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द एलिमेंट column, and then go to the symbol. The symbol of sodium is Na, the symbol of carbon is C, and the symbol of oxygen is O. Then as per the question the percentage weight was given. Then the percentage weight is for sodium 43.4, for carbon 11.3, and for oxygen 45.3. The actual atomic mass is sodium 23, carbon 12, and oxygen is 16. Then the relative number of moles is calculated by dividing percentage of weight with the atomic mass. That is for sodium 43.4 divided by 23 is equal to 1.88. For carbon 11.3 divided by 12 is equal to 0.94. And for oxygen 45.3 divided by 16 is equal to 2.83. Then the simple ratio is here. In the relative number of moles column, the smallest number is 0.94, that is for carbon.
then divide 0.94 in all of these relative number of moles, that we can find the simple ratio. तो अगर 1.88 में 0.94 डिवाइड करेंगे तो वो हो गया 2, तो ये क्या हुआ, सिंपल रेशियो फॉर सोडियम. लाइक फॉर कार्बन 0.94 डिवाइडेड बाय 0.94 इज इक्वल टू 1, and for oxygen 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा. तो ये 3 चला गया सिंपल रेशियो. तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है, तो जो सिंपल रेशियो है वो भी होल नंबर रेशियो होगा. अगर 2.5 आता है तो उसमें क्या करेंगे, अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 5. तो सब में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या ना, सुइटेबल इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा होल नंबर रेशियो आ गया. आज यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो जो भी सिंपल रेशियो है वो हो जाएगा होल नंबर रेशियो. तो हेंस द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, फॉर सोडियम दैट इज 2, फॉर कार्बन दैट इज 1 एंड फॉर ऑक्सीजन दैट इज 3. तो Na2CO3, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज Na2CO3. नेक्स्ट, for the next side, what is a mole concept? Now I go to the mole concept. What is mole? What is mole concept? The definition of a mole is the, according to definition, a mole is the amount of substance which contains the same number of chemical species. एक स्पेसिस के अंदर क्या क्या जाता है ना, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स. आज देयर आर एटम्स व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, जो कि इक्वल होता है किसके साथ ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप के साथ. Now the mole is the unity of a measurement for the amount of substance in the international system of unit. SI यूनिट में जो सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अगर यूनिटी कैलकुलेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो मोल उसका यूनिट है. इन अदर वर्ड्स, कैसे मोल को डेफिनेशन डिफाइन करा जाता है, इन अदर वर्ड्स, ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस और ए मोल ऑफ ए पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज exactly 6.022140076. This is the exact value into 10 to the power 23 particles. For this we can take 6.023 into 10 to the power 23. This is the approximately value, which may be atoms, molecules, ions or any electrons. मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है ना, मैथमेटिकली 12 ग्राम ऑफ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन. एक मोल ऑफ कार्बन जिसको बोलते हैं उसका एटॉमिक मास के साथ समान है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन. हेंस 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एटम, and 6.023 × 10⁻23 here 6. The value 6.023 × 10⁻23, it is known as Avogadro's number. Avogadro's number is always equal to 6.023 × 10⁻23. And the mole is a SI unit which is symbolically represented as mole. For calculating the number of moles present in any molecule or atom is written as number of moles N is equal to mass divided by molar mass. What is the mass of the substance or compound divided by the actual mass or the molecular mass or the molar mass of the compound. If we divide mass divided by molar mass, then we can find the number of moles present in that compound, where molar mass is the collective name for the both atomic mass and molar mass, molecular mass. If there is a single atom, then this molar mass designates as atomic mass. If there is a molecule, then we can calculate molar mass as molecular mass. Moles in term of molar mass. Now the molar mass of any substance is its atomic mass, molecular mass or formula mass in grams per mole.
The molar mass of a substance is the mass of a 6.022 or 6.023, you can take, into 10 to the power 23 number of atoms, molecules or formula units of that substance. For example, if the atomic mass of sulfur is 32.066 mu, we can take the unit of atomic mass is AMU. Then the molar mass is 32.066 gram per mole, because the molar mass unit is, the SI unit of molar mass is gram per mole. A mole of any substance has been redefined in the SI unit as the amount of that substance containing an exactly defined number of particles, which is the Avogadro's number, and the Avogadro's number is designated as n, and the value of n is equal to 6.023 into 10 to the power 23. एनी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा वो क्या कंटेन करेगा ना, अकॉर्डिंग टू नंबर द वैल्यू इज 6.023 in 10 to the power 23. Therefore, the molar mass of a compound now is simply the mass of this number of molecules of the compound. For example, 1 mole of water molecule, water, is equal to 6.023 in 10 to the power number of atoms present in water molecule. Next, Avogadro's hypothesis states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain the same number of particles. What is Avogadro's hypothesis tell? ना equal volumes of all gases, for all the gaseous atoms, जो भी वॉल्यूम रहता है, equal volume of all the gases at condition is same temperature and pressure contain same number of particles. The volume of 1 mole of any gas is called its molar volume and is equal to 22.4 liter at standard temperature and pressure. Molar volume allows conversion to be made between moles and volume of the gas at standard temperature and pressure. This is for volume condition. We can explain the molar mass in terms of volume. For example, 1 mole of oxygen gas is equal to 22.4 liter at STP. 1 mole of nitrogen gas is equal to 22.4 liter at STP. Now, I am giving you some examples related mole concept. The question number 1 is calculate the molar mass, calculate the mass of the 6.022 10 to the power 23 molecule of calcium carbonate. And the solution is here. First, the molar mass of calcium carbonate is 40 for calcium, 12 for carbon, and oxygen is 3. So 3 into 16, 18. That is total is 100 gram. The number of moles present in calcium carbonate, which is equal to number of molecules divided by Avogadro's constant. The number of molecules is 6.022 10 to the power 23 divided by Avogadro's constant, that is 6.022 in 10 to the power 23, which is equal to 1 mole. Mass of calcium carbonate is equal to number of moles according to formula, number of moles into molar mass. Then the number of moles value is 1 and the molar mass is 100. Total is 100 gram. Mass of calcium carbonate is 100 gram. This is the answer. Go to the second example. Calculate the mass of 12.044 into 10 to the power 23 carbon atoms. The solution is number of moles of carbon atoms is equal to number of atoms divided by Avogadro's constant. Remember always the formula of this equation so that you can calculate easily. Which is equal to, given mass is 12.044 into 10 to the power 23 number of atoms is given. So number of atom is equal to 12.044 in 10 to the power 23 divided by Avogadro's constant value is 6.022 in 10 to the power 23, which is equal to 2 mole. Then the number of moles present in the carbon atom is equal to 2 mole. And the mass of the carbon atom is equal to number of moles into atomic mass.
which is equal to 2 into 12 is equal to 24 gram. For the mass of 12.04 into 10 to the power 23 number of carbon atom, the mass is 24. Next question is, an atom of some element containing X weighs 6.644 into 10 to the power minus 23 gram. Calculate the number of gram atoms in 40 kg. Solution is, mass of 1 mole of X atom is equal to mass of 1 atom into Avogadro's constant. Mass of 1 atom is given 6.644 into 10 to the minus 23 into Avogadro's constant, you know, that is 6.022 into 10 to the 23. The value is 40. So the amount of X is equal to 40. We can calculate the amount of X is equal to 40. Then go to the number of atoms. Number of gram atoms or atoms of X is equal to mass of X divided by atomic mass. The mass of X, we calculate that 40 divided by atomic mass. What is the atomic mass? Now atomic mass is atomic mass is 40. Here atomic mass is 40, but 40 kg we convert it into gram, because there are, the question is calculate the number of gram atoms. So we convert 40 kg into gram, that is 1000 divided by 40. So the value is 40 into 1000 divided by 40, which is equal to 1000 gram atoms. Next question is, a metal M of atomic mass 54.94 has a density of 7.42 gram per cc. Calculate the apparent volume occupied by one atom of the metal. Solution is, मास ऑफ वन मेटल आटम का मास गिवन दिया गया है क्या ना 54.94. देन फर्स्ट कैलकुलेट मास ऑफ वन मेटल आटम इज इक्वल टू 54.94 डिवाइडेड बाय 6.022 10 to the 23 ग्राम. ऐसे करेंगे तो हमको वॉल्यूम में पता चल जाएगा क्या हुआ ना 9.12 × 10 to the 23 ग्राम वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मेटल आटम इज इक्वल टू मास ऑफ वन मेटल आटम डिवाइडेड बाय डेंसिटी. तो मास ऑफ वन मेटल आटम क्या कितना निकला था ना 9.12 इंटू 10 to the 23 डिवाइडेड बाय डेंसिटी गिवन है कितना है 7.42 ग्राम पर सीसी. तो अगर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.23 इंटू 10 to the 23 सीसी. मीन्स वॉल्यूम का सिंबल है क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी में लिखा जाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर if atoms of hydrogen, sulfur and oxygen in 5 mole of H2SO4. Solution is, 1 mole of H2SO4 contains, H2SO4 का सिंबल क्या है, H2 सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड उसका सिंबल है H2SO4. तो H2SO4 में क्या क्या रहता है ना 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन आटम. देन 5 मोल ऑफ H2SO4 कंटेंस, कितना कंटेन करेगा ना 5 मोल्स अगर हो जाएगा तो 2 × 5 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन आटम, 2 × 1 2 मोल ऑफ 5 मोल ऑफ सल्फर एंड 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन आटम. देन फॉर 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन आटम, 1 हाइड्रोजन आटम contains 6.022 × 10 to the 23 number of atoms. Then for 10 mole of hydrogen atom, 10 into 6.022 and 10 to the 23, which is equal to 6.022 and 10 to the 23 hydrogen atom. Likewise for sulfur, that is 3.011 in 10 to the 24. For oxygen, it is 1.204 in 10 to the 25 number of atoms. This is the answer of the Thank you. Thank you to all of you for listening and for watching my YouTube channel. And this is the most important thing for the basic concept of chemistry, the mole concept
and the empirical formula, the molecular formula. Watch thoroughly and sincerely, watch bit by bit, listen all those words and read all those words. If you have any doubt, then go to the comment box and comment me as soon as possible. I will reply in you definitely. And last but not least, please like and subscribe for more updates, because this is my new channel, and I am taking a new step for the students, because lockdown is continuing, and we are studying the students on through online. So I am taking a step for the students to take online classes, and so that I am creating this YouTube channel for the students for their benefits in the lockdown season. So please and please like and subscribe for more and more updates, and ask your doubt as soon as possible. Thank you to all of you. Let's meet in the next video with more updates and more new parts of basic concept of chemistry. Thank you all of you. Goodbye. Thank you.